Good morning, students. Today I will take revision of accounting standards. Names first. S1, disclosure of accounting policy. S2, inventory valuation. S3, cash flow statement. S4, contingencies and events occurring after balance sheet date. Yes, Aditya Sinha, can you take revision of other accounting standards? Up to 4 standards I already answered. Yes, Aditya ji. Yes, who is going to take a revision? Fast. Okay, Rashmi ji. Start. Yes, sir. Good Hello. morning. Yes, sir. AS1 disclosure of account reports, AS2 valuation of inventory, AS3 cash flow statement, AS4 contains an event occurring after the balance sheet date, AS5 net period loss for the period item and change in accounting policy, AS6 remove, AS7 construction contract, AS8 remove, AS9 revenue recognition, AS10 property plant equipment, AS11 the effect changes in the accounting policy. एक सेकंड, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. आराम से बोलिए, थोड़ा आवाज अलग आ रहा है आपका. हाँ Yes, जी. sir. AS12 accounting for government grant, AS13 accounting for investment, AS14 accounting for evaluation, AS15 employee benefit, AS16 borrowing cost, AS17 segment reporting, AS18 related party बस disclosure, बस बस AS19 बस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, आस्था जी. आस्था. AS18. माही, प्लीज रेज योर हैंड. हाँ माही, कंटिन्यू. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Okay, sir. AS18 is related party disclosure. AS19 is leases. AS20 earning per share. AS21 consolidated financial statement. AS22 accounting for tax on income. AS23 accounting for investments in associates and consolidated financial statement. AS24 discontinuing operation. AS25 interim financial reporting. AS26 intangible assets. AS27 financial reporting of interest on joint venture. AS28 is impairment of assets. AS29 is provision contingent liabilities and contingent assets. माही, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली बोली तुम. तो Thank you, कैन यू sir. टेल मी, Yes. when we are doing asset based accounting standards, whenever we are recording any asset, what is the recognition criteria? सर एक बार आप प्लीज रिपीट करोगे दोबारा से. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है कोई भी एसेट रिकॉर्ड करने का? आई एम गिविंग यू हिंट, टू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. एएस रिकॉर्ड करने का सर एसेट कॉस्ट रिकॉर्ड और कर, रिवैल्यूएशन वाला. हाँ नहीं, कोई भी एसेट रिकॉर्ड करने के लिए दो क्राइटेरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो दो क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, यस रिकॉर्ड. हाँ जी सर. सिंपल है बेटा, याद आना ही चाहिए था. हैव यू रिटन योर 100 पेजेस बुक? हाँ जी सर. फिर कैसे याद नहीं आया? हर स्टैंडर्ड में तो ये दो वर्ड्स फिक्स है. प्रोबेबल दैट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to the enterprise and cost can be measured reliably. मेजर्ड रिलायबली. सॉरी सर, याद था मुझे, स्किप हो गया माइंड से. ओके. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम लोग कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर. इन केस ऑफ AS10 कौन से दो मॉडल्स हम लोग फॉलो करते हैं? AS10 में सर हम रिवैल्यूड वैल्यू एंड मॉडल. सर मॉडल क्या नाम है, एक सेकेंड. AS10 में हम क्या नाम है, कॉस्ट मॉडल बराबर है, से. कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, ओनली टू मॉडल्स आर देयर. एंड हाँ जी. आफ्टर दैट हमने कौन सा एस देखा था? AS13. तो AS13 में आपने कौन से दो मॉडल फॉलो किए? AS13 में सर हमने In case of short term, cost or market value which is low, fair value which is lower, and in case of long term, cost minus permanent reduction in the value of investment. ये दो मॉडल्स हमने फॉलो किए. माही जी, आप पढ़ाई बहुत कर रही हो, बराबर है.
आई नो द प्रेशर, पर ये रिवीजन में रोज आने के बाद लेता हूँ, तो आपको ये दो हाँ वर्ड्स तो आपको याद आने चाहिए थे। सिर्फ मतलब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत सही लगा जब आप स्टार्टिंग में आए तब, पर आई डोंट नो कि आप बाकी टॉपिक के अंदर का भी पार्ट उतना बढ़िया तरीके से बात किया तो, और आपका क्या होता है, एंड दिस इज ओनली द रीजन सर स्टूडेंट। एक्चुअली ना हाँ मुझे बोलिए। आदत नहीं है ऐसे आंसर करने की, तो मेरे को आता था वो, बट पता नहीं मैं बोल ही नहीं पाई, पता नहीं ऐसा क्यों, आई डोंट नो। देखो एक बात है कि मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हाँ जी। जब ऑल टॉपिक्स कम टुगेदर इन एग्जाम तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसीलिए आई हाँ ऑलवेज टेल टू आवर स्टूडेंट्स कि आप लोग जूम पे बात कीजिए, यू विल फाइंड इट वेरी इजी आफ्टर सर्टन डेज, ओके, जितना हो सकता है। एंड व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो टेक इट इन द पॉजिटिव वे कि मुझे ये आंसर्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। डोंट ओनली लिसन द सेशन, बट हैव इंटरेक्शन इन द सेशन। दो your mic is mute or not unmute, it is not the ये कुछ नहीं है, but the way you are following these sessions are very important। कि आप लोग इसको सिर्फ है ना एक यूट्यूब का लेक्चर मत देखिए, इंटरेक्शन रखिए तो यू विल गेट रिजल्ट्स। आज आपकी गलतियां क्या हुई तो, वन, यस आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू हैव नॉलेज बट यू कैनॉट रिकॉल इट। Number one, you remember that two words, and that is very important. Recognition criteria. Probable that future economic benefit will flow to the enterprise, and cost can be measured reliably. Second one, you recalled S2, you recalled S10, but I don't know what happened for S13. In S13, uh, you have to answer like सर, this. आई नो सर। बोलिए बोलिए। बोलो सर, आप बोलो। हाँ, तो कॉस्ट माइनस परमानेंट रिडक्शन इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। यस सर। and short term investment is cost or fair कॉस्ट value एंड whichever फेयर is low। वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। यस। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने कौन से कॉलम्स बनाए थे व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लेजर इक्विटी अकाउंट्स शेयर में? सर, नंबर ऑफ डेट पर्टिकुलर्स। हाँ, particulars, number of share, amount, date, particulars, number of shares and amount. एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में कौन से कॉलम बनाए थे? इन्वेस्टमेंट्स एंड डिबेंचर्स में सर हमने बनाया था डेट, पर्टिकुलर्स और फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। नहीं फेस नहीं वैल्यू सॉरी, था वो। इन्वेस्टमेंट्स में बोला है आपने, वो डिबेंचर्स। हाँ बराबर है ना, फेस वैल्यू था हाँ वो, जी। फेस वैल्यू। हाँ जी, हाँ जी। और डायरेक्ट एंट्री या सर डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री, चलो बढ़िया है। सो फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। कॉस्ट। हाँ, एंड व्हाई वी प्रिपेयर फेस वैल्यू कॉलम? सो फेस वैल्यू हमने इसलिए बनाया था, डिविडेंड सर उसी पे कैलकुलेट होता है ना। इंटरेस्ट बोलना है नॉमिनल या आपको। फेस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, यू आर करेक्ट। आप डिविडेंड नहीं बोलते इधर, इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, बिकॉज वी आर सॉल्विंग ओके सर। डिबेंचर्स प्रॉब्लम। देन फेस वैल्यू बनाया, यस। इंटरेस्ट बनाया, फिर हम लोग क्या करते थे, यस। सी कहाँ पे लिखते थे हम लोग? सी, वे सी हम लोग, ए इन फेस वैल्यू, बी वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, इन सी नंबरिंग व्हाट वी हैव डन, in inner column, if we have written less, if it is x interest, we won't multiply by, we won't deduct interest amount from the cost, we will directly take d cost column। okay, हमने solve किया था ना last time? have you practiced it? हाँ जी सर। यस सर। नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस किया रहता यस तो एबीसीडी याद आया रहता। ठीक है, ये बात नहीं है। 2 दिन में आपने कितना टाइम दिया अकाउंट्स को? सर अकाउंट्स को मैंने, मेरा सर वो इससे पहले वाला AS13 से पहले वाला रह गया था, मैंने वो कंप्लीट करा, फिर उसके बाद AS13 मैंने पूरा करा सर, डिबेंचर्स वाला टॉपिक भी और इक्विटी भी, फिर उसकी थ्योरी भी रीड करी, फिर उसके नोट्स भी बनाए। सो फिर अप्रोक्स सर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स याद क्यों नहीं आया आपको? हैव यू डन दैट 11 नंबर का सम? 11 नंबर का तो सर आपने करवाया था टीवाई के 12th। 11, मैंने TY के मैंने खुद किया था, यस सर, पुरोहित वाला। पुरोहित वाला किया आपने? हाँ जी सर। बहुत ठीक है, बट
थोड़ी सी रिविजन्स और रिकॉलिंग करना पड़ेगा अच्छे से, नो डाउट। एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्चुअली कल अलग बैच चालू थी, ल्यूरेज ओपन हो गया। पुरोहित का सम आप बोलना चाहोगे अच्छे से? कॉन्फिडेंस है आपको आज? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, गलत हुआ तो भी आई विल हेल्प यू आउट। यस, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। यस, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश विथ S13 and after that I am going to take S10 के remaining questions. I'm not, yes, if possible तो S10 के question देखता हूँ मैं, but we will finish with S13 and second up I will take S16 so I can give you some homework also, okay, for S16. चलो ठीक है माही, yes, let's start. ओके सर। And don't worry, I'm with you. तो आपको कोई ओके सर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि क्या कॉलम्स ओके। आपको बनाने हैं, ओके? चलो, ओके। ओके सर। सी स्टूडेंट्स, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर यू नो when we are going to complete our syllabus, or whenever we are now in the phase of completion of the syllabus, we have completed actually 40 to 50% of the syllabus, and it is going to happen that you will forget each and everything, or you cannot recall your important points, and that is only the reason I always tell you to face Sanket sir. If you can face Sanket sir, it means that you are going to pass exam. If I'm asking, I will ask you directly those questions which are important one. I'm not going to ask you those questions कि जो irrelevant है या कुछ भी उसमें नहीं होगा, तो वैसा नहीं होगा. And if you can recall any question any time, it means you are doing proper revision. And I'm not saying कि Mahi is only the student, ऐसा नहीं है. Other students also will have the same problem. They know the answer, but they cannot recall on the proper time. और इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि यू हैव टू डू सम highlights or or red pen adjustment or your 100 pages book, and continuous reading of those notes will give you the 100% result. ये ध्यान में रखना, कोई बात नहीं, चलिए. Now we'll do with this TYK number 12. Yes, Mr. Purohit furnishes you the following details regarding to the holding of 8% debentures. Opening balance 1 lakh, and see here there is a question of brokerage. There is a question of brokerage. चलिए एक मिनट ना, मैं जस्ट ये ओपन कर देता हूं. माई हैव यू फॉलोड माई वे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? यस सर। क्या आपने इंस्टीट्यूट का आंसर का वे फॉलो किया था? नहीं सर, जो आपने बताया था लॉट 1 लॉट 2 वैसे ही करा था मैंने। ओके, ठीक है. ठीक है बेटा, देखिए अभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पूरा नहीं लिखते बैठूंगा. ओके। ओके सर। एंड हाँ, मैं आपको आंसर में दिखा दूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. हाँ, फर्स्ट थिंग 1/4/2001 ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 and cost 1,18,000 opening balance. And see, balance sheet date is also 31st of March. What it means? Balance sheet date is also 31st March means and your opening date is also 1st April,
एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30th सितंबर एंड 31st मार्च। इसका कुछ मीनिंग होता है हाफ बेटा? ईयरली, हाफ ईयरली सर पे करते हैं ये अपना इंटरेस्ट। सो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करा हुआ है पूरा, 1 अप्रैल 2001 टू 31 मार्च नो टू बेटा, थाउजेंड नो टू बेटा, इसका इंपॉर्टेंस इज दैट देर इज नो आउटस्टैंडिंग एंट्री, ओके ओपनिंग ओके रिसीवेबल एंड क्लोजिंग रिसीवेबल। सी, लास्ट टाइम आपने ये किया था 31st of March and then हाँ your books are closed on 31st of December in last illustration. So we have हाँ written 3 months का interest, opening interest, remember? यस सर, पर ये प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 31 मार्च 2002 दिया हुआ है, 31 दिसंबर नहीं दिया हुआ। हाँ, एंड बैलेंस शीट डेट एंड इंटरेस्ट डेट आर सेम, सो देर इज नो ओपनिंग रिसीवेबल। तो पहला लाइन आपको बुक पे लिखना है, इंटरेस्ट रिसीट डेट is equal to balance sheet date 31st March, and therefore no opening and closing interest receivable। एक्री नहीं हुआ? करेक्ट? यस सर। ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। यस। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट इन फर्स्ट लाइन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट? यस सर। इन फेस वैल्यू कॉलम अमाउंट बताइए। 1,20,000। वेरी गुड। इन इंटरेस्ट कॉलम वेदर देर विल बी एनी अमाउंट? नो सर। No, because there is no opening interest. And what is cost? 1,18,000। 1,18,000. Very good, beta. Very good. Second date. So now you have, only for simplicity, 1,200 debentures, because one debenture is of 100 rupees, correct? यस सर। So you have 1,200 debentures. Now when you acquired second lot, this is your lot 1, 1 जुलाई। 1st July, correct, beta. So what I'm going to write it in face value column? फेस वैल्यू में डिबेंचर्स हमने लिए हैं 100 डिबेंचर्स, 98 फेस वैल्यू में सर 100 into 100, so that will be Okay, 10,000। 10,000. When you paid last interest, received last interest, 1 जुलाई है, 30 सितंबर सर एंड 31 31 मार्च, यस, 31st मार्च, वेरी गुड। मार्च। तो हाउ मेनी यस। मंथ्स का इंटरेस्ट इज यू हैव टू पे टू अप्रैल दैट में पर्सन? जून, 3 मंथ्स का सर। वेरी गुड बेटा, 3 months। सो इधर साइड में 3 months लिख दो। कहां से कहां तक? अप्रैल टू जून, ए जून। टू जे, ठीक है? यस सर। हाँ, सो इन फेस वैल्यू 10,000। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताओ। 10,000 सर इंटू 200। 10,000 इंटू, सॉरी, हाँ, 8। कितना परसेंट? 8% एट इंटू में 3 बाई परसेंट 12 टू बाई सर 12 200। कैसे यस दे रहे भाई? 2/12, हाउ मच यू आर गेटिंग? 200 सर। 200 इज करेक्ट? यस सर। पक्का ना बेटा? यस। नहीं रे, मेरा तो अलग आया। 1 मिनट सर। 10,000 सर 2/12 है ना, आपने मंथ 3/12 है ना, आपने 2/12 ले लिया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर है, हाँ। इनर कॉलम पे माही क्या लिखू? 100 डिबेंचर्स इंटू, व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज 98, सो सर आ जाएगा 90। 9898 कॉस्ट में। हाँ, तो कितना लिखू? 100 इंटू 98 टू बैंक में लिखा, बराबर। और कुछ लिखना है बेटा इसमें? ये 200 सर लिख इस दिया। यू आर मिसिंग वन पॉइंट। ब्रोकरेज इज 1% टू बी पेड। ओके ओके सर। तो कितना ऐड करूं उसमें? 100 इंटू 1%। 98 प्लस 1%,
1%, sir. सो दिस इज, ये सी में लिखा, तो डी में कितना आया आपका? फटाफट कीजिए माही, कैलसी किधर है आपका? 100 इंटू 98 प्लस 1%, ये फटाफट network करना है। issue, sir. हाँ, Okay. फटाफट कीजिए ना, कैलसी पे कितना आया? 9898। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट जल्दी बताइए, विच इज नेक्स्ट डेट? यस, एनी अदर स्टूडेंट? रचना, वाह, वेरी गुड बेटा रचना। हाँ जी, Good morning, बोलिए sir. रचना जी, नेक्स्ट डेट। Next date, 110, sir. We 110? sold the debentures. नो, 30th September. 30th September, interest received हाँ, also. Yes. on 30th September, what are you going to write? By bank. TYK? Okay, sorry. हाँ, by bank. For how many months, beta? 6 months, sir. 6 months. So how many debentures you have? 1,000 to 1,20,000 plus 1,20,000 plus 10,000, 10,000. 1,30,000 into 8% into 8% 6 into 6 by 12. Okay. 5,200. Yes. 5,200. See, by bank 5,200. You can check. Yes. इधर देखो, ये देखो साइड में. हाँ. Yes, sir. 5,200. Are you getting the same amount? Yes, sir. Why there is no opening interest outstanding? Because the date of interest payment and the closing date of Balance balance sheet is same. are same. Next. Now next date is 1st October. You sold 200 debentures. You are using weighted average method or FIFO method? FIFO method. FIFO method. So from where? Yes, starting में कितना था आपके पास? 1200. First was Then you bought 100 100. debentures. Then you sold 200 debentures. 100. Out of which First lot lot. 1, no? Yes, sir. Lot 1 में से आपने 200 debentures बेचे. Okay, so on which side are you going to write this? Credit side. Credit side. Face value column में कितना लिखूं? 200 into 100, 20,000. 20,000. Interest is 0. Because, yeah, just now we received interest. Yes, 0 interest. 200 debentures into what is the price? 100 only. 100 only. And what are you going to deduct? Minus 1% brokerage. Brokerage. In case of sale, brokerage is added or deducted? Deducted, sir. So what will be the answer? 19,800. 800. Okay. But immediately you will calculate Profit or loss on profit or sale of loss. Now debenture. 1,18,000 is the lot 1 ka cost, correct? Yes, sir. For 1,20,000 face value. And you Into sold 20,000. 1,20,000 is a face value into 20,000 because that is the price of face value of sold debentures. yes, sir. So value will be 19,007. 19,667. So you are in profit or loss? Profit, sir. Profit of what? ये दोनों का 133. difference. Yes, 133. 133 rupees is your profit. Very good. Profit you will write on the debit side or credit side? Debit side to P&L profit. Yes, very good. So you can check the answer. 1st October, same sequence, 200 into 100 into 1%. Okay, and working note 1 you are going to prepare. Profit or Yes. loss on sales. Sales value as above. Cost of sales 1,18,000 divided by, you can do it in this way, divided by 1,20,000.
So into 20,000, or you 20,000. can do by numbers also. So face value भी जा सकते हो, या you can do by numbers. Okay, because here I have done it in numbers, and Yes, above I have done it in the face value calculation. Will give you the same answer. Either go by numbers or go by face value. आप कहाँ से जाओगे बेटा, फेस वैल्यू से या नंबर से? number, sir. We are used to that नंबर्स, now. ठीक है, नंबर्स जैसे भी आपको लगता है वो कीजिए. नाउ विच इज द नेक्स्ट डेट बेटा? 1/1. 1st January. Now tell me, on 1st January means you will pay interest, no, because it's a purchase. Yes, sir. So 3 purchase months के of केस में how many months का interest you are going to pay? 3 months. 3 months. Very good. I think आपको ये चैप्टर पसंद आया लगता है. हाँ सर, ये किया भी था तो सब कुछ याद है. Lot 3, how many debentures? 50. 50 debentures. ठीक है, lot 3 आ गया. हाँ, so how are you going to write this lot now? 50 debentures. Face value में कितना लिखूं? 50 into 100, 5,000. In face value column 5,000. Interest column 5,000 into 8% into 3 5,000 by into 12. 8% into 3 by 12. I will do the 100. calculation. 100. 10 कहाँ से आया रे? 100, sir. 100. See beta, see now in exam, if they have given, now here it is very specifically given X interest, correct है? Yes, sir. हाँ, suppose ये कम interest होता तो भी I will tell you how to write the answer. So 50 into 98. Okay. Are you going to deduct interest from this? Mm, no, sir. Directly we No. will write. X interest, no. Okay. And minus 1%. Sorry. Plus 1%. It's a purchase. Mm-hmm. Brokerage. So what will be the amount? 4949. 49. Okay. In cost column. Barabar? Yes, Now sir. see, if it is a कम interest. अच्छा ये देखो, ये आपको ऐसा दिखेगा. करेक्ट है क्या? देखो 1st January to बैंक बराबर है कैलकुलेशन. Yes, sir. First you are going to write it in which column? Cost. नहीं, face value. Sorry, Cost face value, interest, and then हाँ. cost. नहीं, then inner column and then cost. बेटा कैलकुलेशन बताते हैं ना हम लोग, A, B, Sir, C the and inner then D. column. Yes, sir. हाँ, तो ये अपना प्रेजेंटेशन है. Suppose this 98 is come interest. Assume Okay. if in exam this 98 is come interest. So what are you going to write? 58 into 98, 50 into 98 plus 1%. On come interest only you are going to add 1%. Okay. Actually, if you ask me personally, तो इंस्टीट्यूट में मटेरियल में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इंस्टीट्यूट का पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इन दैट व्हाट दे हैव डन, they have added 1% in directly on come interest, and Okay. then they deducted 100 rupees. Got the Okay, sir. concept? Okay. But if you ask me personally, it should be 58 into 98 minus 100 plus and then 1. 1% add करना चाहिए. Yeah. Okay. Now, suppose if answer this type of question is asked, what about brokerage? तो इंस्टीट्यूट आपको दोनों के मार्क्स दे देगी, दोनों के मार्क्स, क्योंकि मटेरियल में ये प्रॉब्लम है नहीं. In study mat you do not have that type of question, but in past we already asked this question. Okay, but if you ask me personally, brokerage should be always given on X interest value. So first you calculate X interest and then add brokerage. Okay. But whoever have prepared the solution, how he prepared it, he had added it
directly on cum price, brokerage, and then he deducted the interest amount. जो सॉल्यूशन दिया था, बट मैं पर्सनल लेवल पे आपको बोलूंगा, यदि अभी रिव्यू के लिए पेपर आता है तो वी विल गिव आंसर, वी विल एड ब्रोकरेज ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. सो कॉस्ट कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखेंगे सर फिर? डिडक्ट करके दोनों आंसर्स मार्क मिलेंगे आपको. नहीं नहीं, 58 to डिडक्ट करके 98. एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ही लिखेंगे ना सर? कॉस्ट हाँ, इधर तो गलत हो गया है, ये -100 किया है, ये चेक चेंज कर देना. हाँ, ये इंस्टीट्यूट के पहले के आंसर में. ओके, अभी हमने सब क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट ही कर दिए, बट एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं बेटा. ही मे गिव यू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, तो उसमें हो सकता है कि वो कम इंटरेस्ट पे आए. गॉट द कॉन्सेप्ट? एंड इफ इट इज ऑन कम इंटरेस्ट, सो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज करेक्ट. 15 to 98. So Okay. if given in come interest, in cost column, we will deduct the interest and then only we will write it, right? According to me. Okay. Okay. But according to past answer, what he has done, he has directly calculated brokerage on come interest value and then he deducted 100 rupees. Mm-hmm. This is Yes, sir. according to Sanket sir. If come interest comes. This is according to past examination question. First, whatever the amount come interest, brokerage will be added in that and then deduct interest. Is as Got per it. examiner. Okay. But you will get marks for both. So don't worry. Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. कहाँ जाना है अभी? चलो. Yes, next one. Next. A, B, C, D. Yes, brokerage we have given. Are you finding this problem easy or shares problem easy? This is easy, sir. This is easy. Debenture easy. हाँ sir. अरे बाप रे. I think shares are more easy. Okay. 31st March 2002. No, now So for 1st February. here, 1st 1st February. February. Where are you going to write this first? It's Okay. same. 200 So debentures at X interest 99. So by bank. In face value column, how much you are going to write? 200 into 100, 20,000. 20,000. कितने months का interest बेटा? Last interest Four, paid on September. 4 months. October, November, December, January. How many months? 4 months. 4 months. So 20,000 into 8% 8% into into 4 by 12. 533. 533. Very good. Okay. Then inner column. 200 into 99 minus 1%. 19,602. Out of which lot beta now? First lot only, sir. Only first lot, because we left with 1,000 and we Yes. have to sell only 200. So what is the sales value? What we have calculated is 19,602. 19,602. How to calculate cost beta? 1,18,000 divided by 1,18,000 divided by 1,200. 1,20,000 into 200. 1,200 into 200. Okay. In numbers. Yes, sir. You can do it in face value also. 19,667. So you are in loss. Loss. 65. 65 rupees. And where to write loss? On the debit side or credit side? Credit side. By loss on sale. Very good. And this is how you are going to prepare your working note. Correct? Yes, sir. Now, Interest received 31st interest. March. Now, how many debentures you have? First lot 800, 100, Plus 50. 950. So 95,000 face value into 8% into 6 by 12. 6 months. okay. 3,800.
3,800. And then beta, they have given you 99 rupees market value. Why it is given 99 rupees market value? Market value. No idea. No idea. We don't Because use we are the calculate interest in the closing balance. We are calculate closing balance lower of fair value or market value. market value. Yeah, correct. So value of debentures. Closing value of debentures. This is a working note. Cost. Now see, from first lot, how many debentures you left with? 800. So 1,18,000 for 1,200. Yes. So 800 के लिए कितना? So calculation 1,18,000 divided by 1,200 into 800. 78,667. 67. हाँ. Then second lot 988. ये 9888 है या क्या है ये? क्या 9898 था? क्या था? 9898, sir. 9898. 9898. And last one is 4949. 49. अच्छा ये कैसे निकाला था बेटा हमने? 100 debentures into 98 plus 1%. प्लस 1%. ये बताया गया नहीं शायद से. बड़ा ये चेंजेस कितने दिनों से नहीं हो रहे. मार्केट वैल्यू 950 into 99. How many debentures you left with? 950, no? Yes, sir. You into 99 and whichever is lower. So 93,513. You are going to record it at cost. Yes, sir. Why students are finding these questions are difficult, beta? सर इसमें माइन्यूट पार्ट है डेट्स. डेट्स अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन हो जाएगा सर. Very good. And you want this presentation, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बाद में देता हूँ लगे तो. And you can do this calculation. Okay? बहुत बढ़िया रचना जी. थैंक यू सर. And balancing figure you can calculate, no? यस सर. By balance correct down and interest has to be transferred to P&L. अनिरुद्ध बोल रहे this is the best chapter. बेटा मुझे सबसे इजी था. yes. Now actually I like to teach practical topics, but I think consolidation, amalgamation, ये chapter another faculty will take, and I have difficult area that I have to cover. Amalgamation, consolidation, I won't say it's a difficult one, but I like that topics. Why? Because these are practical topics. नहीं तो I think now I am a theory teacher, all accounting standards. Okay. नीतीश हो सकता है बेटा. Yes. चलो कोई बात नहीं. 13 number we already solved, no? यस सर हो गया है वो. 15 भी solve हो गया. और 15th एक is ही similar question. one. I think now we left with only one question. 14th one sir. 14th one we हाँ वो ठीक है. And ये एक question था. 5 number. Ilu 5. Yes, Sai Charan. Yes, Sai Good Charan. morning, sir. Sir, in that I have small doubts. Sir, in that brokerage, what happens really in the market, sir? Will that brokerage be X charged on that entire X value of interest. sale, Always X including the interest. interest? Always X interest. Okay. Practically happens it only, right, sir? Okay. What? I mean, sir, in practicality, what will really happen, sir? I am asking. On X interest value, I already answered it. Okay. Sir. And Then see, why beta, BOS has? normally that actually BOS has not taken that value.
that past examiner, he had taken that value. See, examination department is different and BOS is different. Okay, sir. Okay, Thank you. and what happens ki examiner, he prepares in his own mindset, and it might happen because ultimately he is also human being. Okay, but you have to understand that it should be taken on X interest normally in real life. Okay. Okay, sir. Yes. Any other Sure, student sir. who wants to try this fifth number question? It's very simple. Yes, beta Hardik. आदिश्री को ट्राई करने देते हैं, आदिश्री. यस आदिश्री जी. चलो, Good morning, try sir. this beta Adishri. Yes, sir. This is a second last question, and I'm going to take one question of convertible debentures. Also favorite question of examiner. Okay, I'm going to take that. In 2001, Messrs. Y Limited issued 12% fully paid debentures. See, now you just have to do practice of these questions. These questions are really very simple. Now do practice of this question, and you know, in exam it might happen that you will get questions of combination. Some are equity shares and some are debentures. Okay, so वो भी एक question रहता है. Okay, sir. Okay, so Messrs. Y Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each. Interest being payable half yearly 30th September and 31st March. But actually now beta, this date is not important because you are preparing P&L and sorry balance sheet on 31st of March only. So interest received date, receivable is not there. But in this question, you purchase and you immediately sold. Yes. So I will prepare only 3 columns: face value, interest, cost, and here also face value, interest, cost. It's okay na beta? Yes, You sir. can imagine. Huh. So Bull and Bear purchased 10,000 debentures, 101 X interest, and brokerage is 1% of the X interest amount. So in face value column, 10 Sir, will the amount, sir, in face value column 10 lakh 10 lakhs, 100 rupees is the value. value. Okay. Yes, sir. Then on 1st December, when you paid last interest, Last interest is on September, 30th September. So 30th October, September. November. October, December. No 3 December, my dear. Sorry, sir. 2 months, sir. See the date, 1st December. Don't Yes, take sir. December. Okay, sir. Ha. Into 12% into 2 by 2 12. by 12. Hmm. 20,000 20,000. Then inner column 10,000 into into 101 101. plus And brokerage, are you going to add it or deduct it? add it, sir. Purchase, no, sir. So what is the cost? 10,20,100. Are you referring answer? No, sir. I did it. Okay, to bank. Yes, sir. Now these debentures are sold on 1st March. When you got the last interest? Last interest is on 31st September, sir. 30th September. So how many months? 5 months. Very good, 5 months. In face value column, all debentures sold. Yes, sir. So 10 lakhs. Then 10 lakhs into 12%, 5 divided by 12. how much? 50,000. 50,000. In inner column, 10 lakh 10,000, into 103 103, and minus 1. brokerage minus 1%. 10 lakh 19,700. So you are in loss, na beta? Yes, sir. Loss of rupees 400. 400. So loss I'm going to write over here. Easy? Yes, sir. So see the answer. See 13 number screenshot, you can take it now only. Sorry. 12 number.
आज का स्क्रीनशॉट 1. Yes, Adishri ji, tell me over after taking screenshot. Yes, sir. Over, sir. Over, Easy sir. था बेटा ये आंसर्स. इजी लगा आपको ये चैप्टर? Yes, sir. ये देखो. वन मिनट. हाँ, ये बताते क्यों नहीं रहे? कॉलम्स ही बदल गए. 5 divided by 12. कॉलम्स ही बदल दिए हैं. ये देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर. 5 में भी चेंजेस है और 12 में भी चेंजेस है, तो उनको ये ओपन करके बदलो. Over, sir. ओवर. Yes, sir. अभी डिवेंचर्स का नो मोर क्वेश्चन. Yes, I will take one extra question. I already uploaded this extra question. This is the convertible debenture question. Okay. Adishri, you only continue. Okay, sir. See, now this question normally in past, institute asked it for 2 times. But such question is not there in our study mat. Okay. I will try to incorporate this question of convertible debentures because yes, ये question is very important. मैं सिर्फ आशा मैम को बोल देता हूँ. ओके, आरटीपी में भी तो एटलीस्ट डालने की कोशिश करते हैं इस टाइम. A Limited purchased on 1st April 8% convertible debentures. See, I am just going to explain this question because now you are already aware about the calculation. For 2 lakhs at 108. Interest is payable on 30th April and 30th September. And accounting year is a calendar year. So whether interest date and balance sheet date are same or different? Different, sir. Interest date is 31st March and 30th September, September. which is Balance not equal sheet. to Balance balance sheet. sheet date 31st to December. December. Therefore, actually there is no opening interest receivable because you already purchased in 1st April only. Okay, sir. Okay, so there is therefore closing interest receivable will be there. What will be there, beta? Closing interest receivable. Closing interest receivable. And if you have already bought debentures in the last year, then there will be opening Opening receivable. receivable. Now in this question, there will be no opening receivable. Correct? Eh? Yes, sir. Huh, very good. So how many debentures you purchase? 2000. 20,000, no? No, 2,000. Sorry, it's my mistake. 2,000 number. Okay. Yes, sir. Yes, When sir. you received last interest? It is 31st March. 31st March, matlab last day only. Yes, So sir. whether there is any outstanding interest? No, sir. No. So you don't have to pay any interest to last holder. Yes, sir. Okay. So to bank, can I write 1st April to bank? In Yes, face sir. value 2 lakh, Yeah. no interest. So 2,000 into 108. Yes, sir. 2,000 into 108. 108 in the inner column and 2 lakh 16,000. 16,000. Correct? Yes, sir.
On 1st July, he further purchased 1 lakh at 112. 1st July means after April, Hmm. May, June. Okay, 3 6 months, months. 3 months, sorry. 3 months. So in face value column, what I am going to write? To bank. To face Uh, particulars then to bank. Yes, you are correct. To bank. Then face 1 value lakh. column 1 lakh. 1 lakh. Interest on 1 lakh is 1 lakh into 8% into 3 by 12. Calculate. 2,000. 2000. Okay. Then this is cum interest. So 1000 into 112 Minus minus 2,000. so 1,10,000 will be the answer. Answer. Correct? Yes, sir. So you are getting this point also. Very good, beta. And we have completed this. Aage. On October, 80,000 debentures were sold for 105 rupees. 105. Sir, before that, interest should be paid. Average basis, huh? Huh. Yes, sir. But before 1st October, Interest should be paid. 30th September. Yes, sir. एक सेकंड ना बेटा, मैं इधर भी आंसर खोल देता हूँ. Okay. So how many debentures now you have? 2 lakhs plus 1 lakh. 3 lakhs. 3 lakhs. So 3 lakhs pay 8% into 6 by 12. Is it correct? Yes, sir. So 12,000 is the only in interest column, whenever you are getting interest. Okay. Don't write it in face value column. Next. Now you sold. 80,000 rupees On debentures. 1st October means very next day, beta. Yes, sir. Interest is not paid. So interest is not there by bank. 80,000. 80,000. And in inner column, 80,000. no, 800 into 800 into 105. 105. So what is the D column? 84,000. ABCD sequence. And whenever you are selling something, you have to calculate profit or loss. Loss. So see, now weighted average method. So you will consider 2,16,000 Yes, sir. plus 1,10,000 1 lakh 10,000 divided by 3 divided by 3 lakhs lakhs into 80,000. 80,000. Or you can go by numbers also. Divide by 3,000 into 80. Divide by 300 into 80. 86,933. 86,933 is your cost. Yes, sir. And what is your selling price? 84,000. 84,000. So how much loss you incurred? 2,933. 33. So this working note we are going to prepare. Any difficulty in this? No, sir. Correct? Yes, sir. Now here we use which method? FIFO weighted average. Weighted average. And whenever weighted average, you will consider only first lot or all lots? Both slot. All lots. Purchase all lots. 2,16,000 plus 110. Okay? Yes, sir. And in FIFO, you will consider Only first lot. first lot. If first lot is finished, you will go with second lot. Second lot. If second lot finish, you will go with Third. third lot. Okay? Yes, sir. Okay. Normally, first lot में से खत्म हो जाएगा. Okay? Okay, sir. Next. Now, very, very important. On 1st December, that is after 2 months, they have given option for conversion of 8% equity shares, 10 rupees. convertible debentures into equity shares. Now, you are aware about the concept of convertible debentures.
Convertible debentures means after certain years, your debenture will get converted into equity shares. Equity So shares. before that, you are third party. Third party means you are outsider. Outsider. Okay, and when you get converted into equity shares, you become owner. Owners. So this is how company attracts investor. Why they issue convertible debentures? Because they want to attract investor. Investors. Certain years you will be third party. You will get Okay. fixed interest. And after certain years, your investment will get converted into equity shares. You will always enjoy higher dividend after certain years. Okay? Yes, sir. And how many debentures they converted? 25% debentures. They converted into 5,000 equity shares. Okay, now this is very important sentence. Now tell me, how many debentures you have? 2,200. 2,200 because you sold 800 debentures. 800 debentures, correct? Yes, sir. Now 2,16,000 plus 1 lakh. Okay. So now your debentures value 2,200 means 2,20,000, correct? Yes, sir. Face value is 2,20,000. 1,000. So what is the cost of this debenture? What is the cost of this debenture? 2,16,000 plus 1,10,000 divided by 3 lakhs. 2,39,067 rupees. Okay. Out of this, you converted 25%. Yes, sir. So what is the cost of this 25%? Can you tell me? 767. 767. Okay. Yes, sir. Okay. And you can check 59,767 is the answer. It's a cost. And how many debentures you have? 2,20,000. Having face value of 25%. Sorry, 2,20,000 is a face value and 25% you converted. So 55,000. 55,000. So in face value, you are going to write 55,000. This is very, very important. What are you going to write? Convertible. 55,000 in the face value. You converted, no? Yes, sir. So 2,20,000 you left with. See, starting mein you have 2 lakhs debenture. Then Yes, you sir. added 1 lakh face value debenture and you Yes. sold 80,000 value debenture. So you Yes. left with 2,20,000. Out of that you converted 25% into equity. 25%. So you left with nahi. So this value belongs to 2,20,000 into 25%. It is 55,000. 55,000. And out of this 55,000, what is the cost for that? 2,16,000 plus 110 divided by By 3 3 lakhs lakhs into into 2,20,000. And for that, you will multiply by 25%. 5 lakhs. This is the value. Is it difficult or easy, beta? Sir, easy, sir. Now it is easy. Now it is easy. Yes, sir. And see, one more point I want to tell you that for 55,000, you converted it on first December. when? December. December. And when you paid the last interest? September. September. Sorry. September. So September. October and November, November. 2 on months. this 55,000, you are going to multiply it by 8% into 2 by 12. Got the concept? Okay, sir. And Sir, see, interest also should be receivable, sir. for 2 months. 2 months. Only for 2 months. For that 25%. Okay, sir. For that 25%. Okay. Now what about 75%? You are going to continue with 75%. Whether it is converted? No, sir. No. So what is the value? 239,067 into 75%. What is the value?
1,79,300. So this is by balance carried down. Okay. Yes, sir. And 2,20,000 into 75%. 1,65,000. You will continue with that value. 1,65,000 by balance carried down. Got the concept? Yes, sir. But wait, on 1,65,000, now you are going to close your balance sheet. When you paid the last interest? September. So October, November, December, 3 months interest you are going to receive. Receive. On 75%, you will receive 3 months ka interest. And on 25%, it is converted. Therefore, you will receive 2 months ka interest. Okay? Okay, sir. And this 1,65,000 is going to continue in the future. ये 1,65,000 part 75% you are going to continue. आया समझ में आप लोगों को? देखो Yes. एक बार वापस से. See, I have 2,20,000 का डिबेंचर. क्योंकि 3 लाख थे, 80,000 I sold, so I left with 2,20,000. 2,20,000 में से कितना परसेंट मैंने कन्वर्ट किया? 25%, which is 55,000. वो इक्विटी शेयर्स में जाएगा, बाय इक्विटी शेयर्स. और जो नहीं कन्वर्ट हुआ वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखेगा. गॉट द कॉन्सेप्ट? पर जो कन्वर्ट हुआ वो कौन से डेट पे हुआ था? 1st December. December. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का आया? 2 2 months. महीने. और जो नहीं कन्वर्ट हुआ वो कंटिन्यू होगा, उसको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. बट 31 दिसंबर को हमारी बैलेंस शीट कट हो रही है, सो आई एम गोइंग टू रिसीव ओनली 3 months का इंटरेस्ट. बट in next year, on 31st March, for 25% I will get only 2 months, which is receivable. और ये मुझे पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. When actual interest मुझे रिसीट होगा, March. ये ओपनिंग में चला जाएगा. पर बाय बैंक on 25% I will get only 2 months का इंटरेस्ट, and on 75% I will get full 6 months का इंटरेस्ट. Can you visualize this in the next year? Yes, sir. Yes. But wait, question is not over. How many shares you converted? 25%. 25%. But how many shares you are getting? 5,000 shares. Shares. Correct? Yes, sir. And 5,000 shares, when you are converting, what is the value? It is 59,767. But what is the face value of 5,000 now? It is Sir, 50,000. Cost, see, this is debentures face value, 55,000. And this is shares face value. When you open investment account in equity shares, you are not going to write 55,000, though you are writing the same cost. Though you are writing the Same cost. same cost. But don't write same face value. Okay? Because this is debentures. And when you are getting converted into equity shares, you are getting only 5,000 equity shares, not equivalent to debentures amount. Okay? So Okay, 55,000 are you going to write over here, or No, sir. 50,000 in equity shares? 50,000. But cost you will consider same. And one more important point. Why this sentence is given 110 and 15? Market price? Closing closing Which is value. lower. Therefore, this working note is important. Market value 2,20,000. What is the 25% value? 55,000. 5,000. And 2,39,007. 59,767. Correct? Yes, sir. What is the market value of these shares? 5,000 equity shares of. So this is 15,000. 59,767 is a cost. Cost. And this 75,000 is market value. Whichever But you is will consider lower. Okay. And 2,25,000, 1,65,000 is the face value. Is only for understanding purpose. We don't never consider face value in balance sheet. What is the cost of this? 179? Yes, then 300. 300. Correct? Yes, sir. And what is the 110 value. is the market value. So 1,65,000 is the face value. Divided by 100. So 100. we'll get number multiplied by 110. And whichever is lower, we'll continue with the 179,300. And here we will continue with the 179,300. By balance carried down. Okay.
and Yes, here sir. 59,767, which is lower. This working note is also important. Okay. And this working note, see, 25% and 75%. Rewatch this session. If you are not getting it, other students, you want to take screenshot of this question. Extra question I already added on our app. You can check. ऐप पे आ गया क्या देखो एक बार. नहीं आया होगा. Sorry, ये बोलना. I will add it. This question. Okay, but you can take a screenshot. अच्छा था आदिश ये question. Yes, sir. Convertible debentures. Screenshot 4. किसी ने तो पूछा था मुझे last time. Who asked me this question? कोई तो पूछा था. Raise your hand. हार्दिक ने पूछा था. रश्मि ने भी पूछा था शायद से. Yes, Yes, sir. रश्मि. Over. Yes, sir. कैसा लगा बेटा आपको ये क्वेश्चन? Over, sir. एक मिनट. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको बेटा ये? आदिश्री, Yes, sir. Over, sir. एक सेकंड. मानवी पूछ रही है कि ये 3 मंथ्स क्यों लिया. मानवी का क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन बेटा? मानवी इज आस्किंग मी. एक सेकंड. स्क्रीनशॉट नंबर 6 है ये. 6. स्क्रीनशॉट 6. The 3 months interest. Over, sir. मानवी इज आस्किंग व्हाई दिस 3 months. Sir, your balance sheet will be closed on 31st December. The Last last interest interest we paid. paid on 30th September. So Last interest received by us, not received paid. on 31st September. So 3 months of that till मानवी जी, हमने पिछला इंटरेस्ट 30 सितंबर को पाया था. वो हमें 30 सितंबर को मिला था. अभी देखो, जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए वो तो 25% वो 1 दिसंबर को कन्वर्ट हो गए. तो 30 सितंबर से 1 दिसंबर बोले तो वो 2 महीना आएगा. पर जो कन्वर्ट नहीं हुए वो हमारे साथ रहेंगे. तो उनको तो हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे मिलने वाला है ना. वो हमारा 75% जो है वो हमने कन्वर्ट नहीं किया. सामने वाले ने कन्वर्ट नहीं किया. तो हम लोग तो वो उनको लेके अपने पास शेयर्स नहीं है. वो तो डिबेंचर्स फॉर्मेट में ही रहेंगे. तो वो तो हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा ना मानवी जी, जो कन्वर्ट नहीं हुए. थैंक यू रोजालिन जी. So when debentures are converted into equity shares, that time brokerage, no, अनिरुद्ध, ये कंपनी का काम है. तो ब्रोकरेज भी इज नॉट चार्ज. बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं अनिरुद्ध जी. यस अनिरुद्ध जी, नो नीड टू कैलकुलेट brokerage at that time. Yes. See, students, this question is not at all difficult. But what happens कि आपको ये क्वेश्चन देख के it might happen that what is the provision of equity shares. So it's very simple that whatever the 25% you will calculate, you have to write it in the cost column, whatever cost you have. And here you will write 55,000. But at the same time, Adishri ji, are you going to write 55,000 in equity shares also? No, sir. No, Face you value face amount, value what of face value shares. amount is given. Yes. एग्जाम क्वेश्चन था. आई थिंक पिछले एग्जाम में पूछ लिया किसी ने. ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये. एक बार देख लेता हूँ. ईयर्स आई थिंक आई हैव नॉट डिफाइंड, पर मेरे हिसाब से 2016 में क्वेश्चन आया था. एंड स्टूडेंट्स गॉट पैनिक इन दैट एग्जाम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आई नेवर टुक इट इन एग्जाम इन क्लास. And institute suddenly asked this type of question. But those students who had their presence of mind, okay, Shreya Joshi करके थी, she was the ranker of this batch.
तो उसने ये क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया था जितना मुझे याद है. ओके, so very simple, and I hope you enjoyed this topic. Any doubt you have regarding this chapter? Otherwise, we have finished it. Short. Better you can do it, take it on YouTube. सुवेंदु जी, सुवेंदु बेटा यूट्यूब से ले लेना ये. यस, रश्मि जी ने पूछा था. अच्छा, हार्दिक को कुछ डाउट है. यस बेटा हार्दिक, व्हाट इज द डाउट? Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, बेटा. sir, if we sell these shares, then sir, we will record it in the investment account only no, from that time. After conversion, you can, whatever you have now, if you sold it, you are going to record it in investment in equity shares. Now it becomes a problem of equity shares. After Equity conversion, share. till conversion, it is debentures. After conversion, it is equity shares. And sir, when we will prepare the opening balance of the debentures next year, we will carry only 75% with us with Yes, the interest of by 3,300 balance and carry 6. down and by interest receivable. Yes, you will continue with Okay, that. sir. Sir, thank you, sir. बस यही दो था. But normally, Nitish, I am giving screenshots at the end only. This AS13, we are going to continue with this chapter. Some students बेटा simultaneously they are writing from YouTube. इसीलिए मैं आपको अब भी दे दिया. ठीक है, लास्ट में वापस अभी रहने दो. लास्ट में मैं बाकी इसका दे दूंगा. यस नीतीश, यू आर करेक्ट. आप स्टूडेंट्स को वो इजी जाता है. बट बेटा यूट्यूब पे देख लेना. आई थिंक आफ्टर 1 hour 12 minutes you will get this screenshots. 1 hour 10 minutes or 12 minutes. ठीक है. सो रश्मि जी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस क्वेश्चन. आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन सजेस्ट किया. एंड यही क्वेश्चन था कि रश्मि जी देख लीजिए एक बार एग्जाम में. यस सर, ये एमटीपी में आया था, बस अमाउंट चेंज था. सर आई हैव डाउट रिगार्डिंग वो कॉम इंटरेस्ट, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए जो सेल के टाइम का, हाउ टू कैलकुलेट देन ब्रोकरेज ऑन कॉम इंटरेस्ट. ऑन कम इंटरेस्ट यस सर. नहीं, ब्रोकरेज तो देखो 200 डिबेंचर्स एज्यूम. 108 इज द कम इंटरेस्ट प्राइस. नाउ एक्चुअल विथ पास्ट एग्जामिनर जो था उन्होंने 1% इसमें से ही माइनस किया. एंड देन अगेन यू विल डिडक्ट वट एवर द इंटरेस्ट यू कैलकुलेटेड ओवर देयर. एंड इफ यू आस्क मी, ये मेरा संकेत सर का तरीका है. ये सॉरी ये एग्जामिनर का तरीका है. और मेरा तरीका होगा 200 इंटू 108 माइनस इंटरेस्ट, एंड ऑन दैट आई विल डिडक्ट 1%. ओके, ये सेल के, सर सेल के टाइम और परचेज के टाइम सेम कैलकुलेशन होगा? सेल के टाइम डिडक्ट होता है ना ब्रोकरेज बेटा. अब ब्रोकरेज सर इंटरेस्ट जो कम इंटरेस्ट है. कम इंटरेस्ट तो आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करना आता ही है ना. वो तो फेस वैल्यू पे होगा. कम इंटरेस्ट पे कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है. वो तो फेस वैल्यू पे होता है ना. सर तो वो इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे बिफोर ब्रोकरेज, ये पूछ रहे हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ब्रोकरेज डिडक्ट करना चाहिए, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं. पर एग्जामिनर डायरेक्टली, जिसने भी पेपर सेट किया था, उन्होंने डायरेक्टली 1% वहां से माइनस किया था. तो पर आई गो आपको एनीवे. दोनों मार्क्स मिल जाएंगे. डोंट वरी. आपको जब हम लोग ऑल्टरनेटिव्स देते हैं ना, तो दोनों के मार्क्स दे देते हैं. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. यस, एनीवन हैज डाउट? Still, if you have any doubt, you can ask me. ठीक है. See, today we are going to start with S16. I will take S16 theory first, and then beta remaining question of S10. S10 के कुछ questions बाकी है, that we are going to take it after break. Okay, S16 I am going to explain you. You will solve illustrations till Monday.
and on Monday we will take illustrations. Okay, so S16 will take maximum 20 minutes, nothing more than that. Okay, ठीक है. So नहीं, you have to round it off बेटा नीतीश, you have to round it off. चलिए, so आपको राउंड ऑफ करना है. सर S13 के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, लास्ट में S13 दो एंड S16 दोनों के स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको. S16. See beta, till now we have completed S1, disclosure of accounting policy. We have completed S17, segment reporting. Segment reporting 10% criteria and 75% criteria. S18 related party disclosures. How many clauses are there? 5 clauses. Very good. S20 we had basic EPS and diluted EPS. Discontinuing operation we have different, वो 3 इसमें define किया था, divided over that. Interim financial reporting, year to date concept is important. Then we have considered S2 cost or NRV, which is lower. In cost, what to include in NRV of finished goods, WIP and raw material, replacement price is there. Okay. Then ठीक है बेटा नीतीश, देखता हूं मैं. Then बेटा S10 property plant and equipment में depreciation and all that. ओके, हाँ, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वगैरह भी था, बाय प्रोडक्ट एनआर भी था, जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ. यस, some important points. And S13 is where we have completed cost, investment in equity shares and investment in debentures. Equity shares columns are important and debentures also columns are important. फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया ना? फर्स्ट मॉड्यूल अप टू डिस्क्लोजर ही था ना? 4 ही चैप्टर थे, तो आउट ऑफ 3 मॉड्यूल्स वी हैव फिनिश विद फर्स्ट मॉड्यूल, और सेकंड मॉड्यूल का भी हाफ. यस, S16 वी आर कंटिन्यूइंग, आई नो. देखो मतलब आपके 1 2 3 किधर हुआ, 1 2 10 10 17 18 20 24 25 and 13 also, 9. So 9 accounting standards we have completed. Okay, मेरा राइट हैंड कहाँ से रो है? मैंने ऐसा किया तो एआई ने वो भी कर लिया. अरे भाई क्या बात है. यस, एआई बहुत स्मार्ट है भाई. हाँ, तो we have completed 9 accounting standards. How many accounting standards we have completed? 9. मतलब almost 40%, 26 27 out of that, one third हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके, गुड. एमसीक्यू की एक बैच रखनी है मुझे, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू टेक एमसीक्यूज, सो आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल. ओके, मैं सिर्फ बोल रहा हूं पर मेरे से हो नहीं रहा है. आप लोग साथ दोगे, एक आध दिन फिक्स करते हैं जब शाम को वगैरह, और एट दैट टाइम बेटा वी विल कंटिन्यू विथ ऑल एमसीक्यूज ऑफ 1 चैप्टर डेली 1 आवर. तो हम लोग ये यूट्यूब पे मैं लाइव कर दूंगा वो लेक्चर. ओके, लेट्स सी, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो एमसीक्यू की भी आपके हो जाएंगे. दो स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू, मैं चैनल पे डाल दूंगा मेरे एमसीक्यूज. चलिए, सो विल स्टार्ट विद द बोरोइंग कॉस्ट.
I hope I made accounting standards easy, ऐसा मुझे लग रहा है. I don't know. What is your opinion? मुझे chat section में लिख देना बेटा कि आप लोगों को easy लग रहा है क्या नहीं लग रहा है अभी. At least because when I studied this accounting standard, it was very boring part of our life. Accounting standard is which is very difficult at that time, which was very difficult, and we thought कि accounting standard is out of syllabus. Okay, it is of no use क्योंकि hardly 5-10 marks का questions होते थे. Now scenario changed in this 15 years, and now institute has given 70% weightage to these chapters. चलिए ठीक है. तो borrowing cost. Now why this accounting standard? Why institute issued this accounting standard in asset? But obvious. Borrow cost means what? Borrowing cost means interest. Those students who were with me in foundation, they are aware about this concept. But जो अभी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता नहीं होगा. ओके, तो interest is why it is normally interest is expenditure, sir. So why interest you considered it in the asset based accounting standard? Logic is very simple. Because this interest is not on all assets. It's on specific asset. And this specific asset means which is qualifying under A16. So whether interest on any asset will be capitalized? No. Interest on any asset is not going to capitalize. Interest on specific asset is only going to capitalize. ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं. सो इंटरेस्ट हर एसेट के ऊपर कैपिटलाइज नहीं होगा. जो एसेट्स S16 के अंडर क्वालिफाई होते हैं तो ही उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा. इन सिंपल लैंग्वेज, I will give you gift. Gift to every student? No. Those who are going to qualify Sanket sir's test, those students only will get the gifts. Okay. Similarly, इंटरेस्ट का है तो गिफ्ट्स मैंने रखे तो सबको मिलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक स्टूडेंट को ही मिलेंगे. और वो स्पेसिफिक स्टूडेंट मतलब मेरे डिफाइन क्राइटेरिया में आने चाहिए, मेरी टेस्ट में वो क्वालिफाई होने चाहिए. सिमिलरली हियर interest is not capitalized. Interest is not added to asset. Sir, interest is normally revenue expenditure. Interest is normally revenue expenditure. You will record it in profit and loss account. Income tax will always consider, see, from the point of view of income tax, we will always try to record it in expenditure side. But accounting standards qualifies certain assets on which interest is not recorded in the profit and loss account, but interest is added to that asset. Now, what are these qualifying assets? We have to understand it in this accounting standard. So, introduction part. Bank has given a loan. This loan to Sanket sir. Sanket sir has paid the interest. And this interest, okay, very simple. Meaning this interest whether it is recorded in the asset side or P&L. That is the question. Borrowing costs are interest and other costs in connection with the borrowing of funds. See, I don't have to pay only interest, but I have to pay some registration charges, legal fees. What about that? This treatment is also considered in borrowing cost. It considers interest and commitment charges.
Number two, discount or premium on borrowings. Sir, when I have taken 1 lakh from you and I will return you 1,20,000. So 20,000 extra premium is also defined in this standard. Okay. Amortization of ancillary cost relating to borrowings. Finance charges, you won't understand it now. Finance charges. Amortization means divide. And exchange difference, we will have a question. Exchange difference, we will have a question. But it does not include, see, sir, I have taken a loan, then only I have to pay interest. Sir, if I issued equity shares, I collected the money and I am paying dividend instead of debentures or loan, that is not my borrowing cost, because I am paying them as dividend as they are equity owners and preference shareholder owners. So I'm not incurring any, that dividend which I'm paying is not my borrowing cost. So suppose for same asset, that qualifying asset, I have taken a loan and I'm paying interest, that will be added. For the same asset, if I issued equity shares and I paid dividend, don't add it. So two different concepts. मैंने लोन लिया, मेरी एक क्वालिफाइंग एसेट है, अभी क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है थोड़ी देर में समझेगा, मैंने उसके लिए लोन लिया और इंटरेस्ट दिया तो वो ऐड होगा. अभी वही एसेट के लिए मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए और डिविडेंड पे किया तो वो ऐड नहीं होगा. मुन्ना ये ध्यान में रखना. तो एसेट के बदले में मैंने लोन लेके इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, ना कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर का डिविडेंड. तो इसको बोलते इंप्यूटेड कॉस्ट. इंप्यूटेड मतलब इंटरनल कॉस्ट. ओके, इंटरनल कॉस्ट इज नॉट अलाउड. ये ध्यान में रखना. ये अपने बाहर वालों को देना चाहिए तो ही ऐड होगा. ये दिमाग में रखना. रनिंग नोट्स, रनिंग नोट्स, बैठे मत रहो. निकम्मे नहीं हम लोग. और यहां पे संकेत बाबा का लेक्चर नहीं चालू, कीर्तन. हाँ, नहीं होगा. प्रेफरेंस शेयर्स का भी नहीं होगा. कमिटमेंट चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस, जब आप लोग लोन के इसमें आते हो प्रणव जी. नेक्स्ट वन, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर. See, I have taken a loan from India, 100 rupees. Okay. And I have option on that day. I will get $2 at 50 rupees. I will borrow from market $2. Why I will attract in the foreign market? Definitely because interest is less over there. So suppose in India, I paid 11% loan. See this concept, beta. I will teach it in very simple way. I have taken a loan from India. I have two options. India se loan lena and USA se loan lena. I have two options. So how much interest I am going to pay over there? 11 rupees. Got the concept? In India, I will pay 11 rupees. Why I will get attracted towards USA? Because in USA, I will get $2 at 50 rupees today. Correct? Now tell me, I have to pay interest on? लिख रहा था, आ नहीं रहा है. ओके, सो एक सेकंड, क्या हुआ भाई? ठीक है, इंडिया में कितना लिया था बेटा हमने? क्या हुआ इसको? ₹100 लिया, 11%, 11 rupees. USA में I got a loan on $2 today.
और मैंने कन्वर्जन किस में किया, इन रुपीस, कितने रुपए से, 100 रुपीज से। आफ्टर 1 ईयर, सपोज इंटरेस्ट रेट इज 4%, तो $2 into 4%, how much interest I paid? 0.08 dollars. But now tell me whether conversion rate is same, beta. Conversion rate, whether dollar will be only 50 rupees after 1 year, whether it will be same. No, but obvious, shareholder will attract because interest rate is lower in USA, so everyone will ask USA rate. Correct hai? So dollar ka demand is more because everyone is attracting towards USA. They are asking for dollars whenever interest rate is low in USA, and therefore my exchange rate get increased. It comes to 55 rupees. So now tell me, I have to pay, I am incurring interest $0.08 into 55 rupees. So 4.4. But wait, my dear, I am also having loss because when I'm repaying that $2, I have to pay extra 5 rupees. Extra 5 rupees because when I bought that dollar, 50 rupees. And when I'm going to repay that dollar, I have to pay 55. So what is my exchange loss? 10 rupees. So I'm not paying only 4.4, but I'm paying 10 rupees extra. So I'm paying 14.4. And if I take it from India, opportunity is of 11 only. And therefore, I will capitalize only 11 rupees and 3.4 I will transfer to P&L. This is a concept. This is only interest is, I will capitalize only 11 rupees. See, if dollar rate is only 52, how much? 52. So I have to pay $8 interest at the rate of 52. $4.16 and $2 into 3 rupees, no, 6 rupees, 10.16. But in Indian interest rate is higher, 11. I won't consider now Indian amount. I will directly capitalize 10.16. If it is greater than Indian amount, opportunity of Indian amount, then only that amount will be capitalized and remaining amount I will consider as exchange loss. And that will be transferred to P&L as per accounting standard 11. 11 mein I am going to teach you this thing. समझी गए हो? देखो, so what is the provision? What is the provision? Yes, now try to understand this concept. Foreign currency borrowings. If you are borrowing from foreign, exchange difference on amount of principal of foreign currency borrowings. Exchange amount means that 55 and 50 rupees. Lower of interest on foreign currency borrowings, that is $0.8, very good, plus exchange difference, 55 minus 50. And if I borrow it from the local currency, whichever is lower. Got the concept? तो exchange difference, suppose ये कम आया,
तो आई विल डायरेक्टली कैपिटलाइज, बट ये कम आया तो आई विल कैपिटलाइज दिस अमाउंट एंड एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Concept is clear. Anyone has doubt, you can raise your hand. If you have any doubt, you can raise your hand. Clear है concept? आदिश्री जी, Yes, sir. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट Yes, sir. इतने जल्दी? Yes, sir. कैसे क्या You बेटा? explained very well, sir. So it has been cleared. इतना इजीली कैसे समझ में आ सकता है भाई? आदिश्री एक ही इसमें समझ गया? हाँ बेटा, Yes, sir. It has been cleared. एक ही एग्जाम्पल में? Yes, sir. ठीक है, देखो रोजालिन जी को कुछ तो डाउट आए. हाँ, यस रोजालिन जी. सर थोड़ा और एक बार बता देंगे? हाँ बेटा, Yes, sir. It has been cleared. एक ही एग्जाम्पल में. Yes, sir. रोजालिन जी यूट्यूब पे म्यूट कर दीजिए. हाँ हाँ सर. सर और एक बार बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. देखो बेटा, एकदम सिंपल है. मैं बाहर से एक बार हिंदी में समझ लीजिए. देखो हम लोग बाहर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ध्यान में रखो. बाहर इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ताकि हम लोग इंटरेस्ट रेट उधर का कम होगा. पर सभी लोग वहां जाके अभी रोजालिन जी पैसा मांगने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा ना. तो आपको इंटरेस्ट के चक्कर में आप लॉस करवा के बैठोगे. कौन सा लॉस करवा के बैठोगे कि जब रिपे करने का नौबत आएगा तब आपको 50 का 55 पे करना पड़ रहा है. ध्यान में आ रहा है? यदि मैंने इंडिया से लोन लिया रहता, रोजालिन जी जरा थोड़ा अनम्यूट ही रखिए खुद को. हाँ सर. तो 100 का मैंने इंडिया में लिया रहता तो मुझे कितना परसेंट देना पड़ता था, जल्दी जल्दी बोलना. 11% सर. 11%. पर मैं बाहर अट्रैक्ट हुआ इसलिए मुझे कितना परसेंट देना पड़ रहा है बेटा? 4%. 4%. तो अभी $2 का लोन लिया मैंने 50 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए चाहिए था. तो 50 $2 लेके आया, 50 रुपए में कन्वर्ट किया तो 100 रुपए मुझे मिल गया. बराबर है? इंडिया में भी 100, बाहर भी 100. पर बाहर मुझे डॉलर में मिलेगा. सर क्या क्या? सर सर यस सर. आप किस पे चिल्ला रही हो? नो सर, मेरा बेटा एक्चुअली उसको स्कूल जाना है तो बोला कि आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है. मैं बोली नहीं नहीं रुक जा, थोड़ी 2 मिनट रुक जा. मम्मी मेरा ई वाला बॉटल किधर गया? ठीक है, बाद में बोलता हूँ. आप वापस से सुन लीजिए. ओके, एक बार ध्यान रखिए. $2 जो है वो आपने 4% के हिसाब से अपने इंटरेस्ट पे किया, 0.08 ये डॉलर. पर 0.08 इंटू 55 रुपीज ये आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज एक साल के बाद रेट जो था वो 55 था. तो 55 था तो वो 4.4 आया. एंड एक्स्ट्रा जो मैंने $2 से एक्स्ट्रा पे किए, तो वो $2 का आज का रेट वो वापस से मुझे देना पड़ेगा. सो 55 माइनस 50, तो वो हमें 5 रुपीज का एक्सचेंज लॉस देना पड़ा. तो मेरे जेब से दो अमाउंट जाएंगे, एक 4.4 और एक 10 रुपया. तो टोटल 14.4. पर वही इंडिया में होता तो 11 रुपीज. तो जितना विच इज लोअर, मतलब 11 रुपए कैपिटलाइज करना है, बचा हुआ आपको पीएनडल में डाल देना है. क्योंकि आप तो जेब में से 14.4 जा रहा है, पर कैपिटलाइज सिर्फ 11 होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और ऊपर का आप लोग 3.4 डालोगे. पर यदि यही अमाउंट मेरी सेकंड केस में एक्सचेंज लॉ मैंने 52 रेट रखा था, तो 52 रेट में मेरा सिर्फ 10.16 ही आंसर आया जो मेरे जेब से जाएगा. तो इंडिया में तो 11 रुपए, मतलब इंडिया में महंगा था, तो पूरा का पूरा 10.16 आप जो है वो कैपिटलाइज करोगे. ये ध्यान में रखो. जितना ये मेरी अमाउंट 14.4 एक्स्ट्रा जा रही है, इधर 10.16 जा रहे हैं, तो आई विल थिंक ओनली फॉर दैट अमाउंट. अभी इंडिया का 11 रुपया यहाँ पे मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, बिकॉज इंडिया में महंगा ही है. तो 10.16 ही मैं कैपिटलाइज करूंगा. बट यदि 14.4 मेरा आंसर आता है तो इंडिया के हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा. रोजालिन जी समझ में आया कि आपको अभी? यस सर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये आपको नाउ इट्स वेरी सिंपल फॉर यू. Difference will not arise if local currency borrowing is greater than
फॉरेन करेंसी. सो डिफरेंस, दिस इज दी, ये देखो ये एग्जाम्पल कौन सा था, पहले वाला एग्जाम्पल था वो फर्स्ट वन, 14.4 एंड 11, एंड 11 एंड इधर 10.16. Okay, so difference will not arise and difference will be transferred to P&L, which is lower. ठीक है, अभी ये no need of this example actually. Now you understood it. Now what is qualifying asset? Let's understand. Yes. That out of India is not allowed to capitalize. जाने दीजिए रश्मि जी, आप लेक्चर वापस से देख लेना. आउट ऑफ इंडिया नॉट अलाउड टू कैपिटलाइज मतलब मुझे समझ में नहीं आया. Okay, qualifying asset, what is the meaning? Now, sir, you are telling us from last 15-20 minutes qualifying asset, qualifying asset. But what is qualifying asset? A16 के अंदर qualify करने के लिए what we have to do? So qualifying asset means an asset which takes a substantial period of time to get ready. See, now this laptop is my asset. And I bought this laptop from market directly. So I don't have to construct that laptop. This is readily available. For this, I have taken a loan, then interest will be transferred to P&L. This is not the qualifying asset. Suppose if I'm constructing one shed or if I'm constructing one plant and which takes more than 1 year, an asset is not ready to use till that point. See why institute issued this standard. Logic is very simple. If you are taking a time to construct any asset and this asset is not yet ready for use, it will take minimum 1 year to get ready. And for that construction, you have taken a loan. So you can call it as pre-construction period interest. And that interest, institute wants that should be capitalized. So if asset is ready to use, after that you are not going to capitalize that interest. But you are constructing that asset and that interest before construction will be added to your cost. This is a simple S16 logic. जो एसेट रेडी है और उसके लिए मैंने लोन लिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज मत करना बेटा, एसेट में मत ऐड करिए, वो P&L में चला जाएगा. इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि हमारी एसेट ये बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, और आपने वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया, तो वो जो इंटरेस्ट है ना बेटा, जब तक एसेट बनती नहीं है तब तक आपको कैपिटलाइज करनी है. एसेट में वो अमाउंट इंटरेस्ट का ऐड करना है. समझी गए हो? एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है. एंड दिस एसेट is usually substantial time is given as 12 months का interest. आया समझ में? Usually it takes more than 12 months. 12 months is now, see, sometimes 9 months is also considered. Now is depending on person to person, management, how they are considering this substantial time. और institute ने is given this thing, substantial time, to management. It's a management decision. So management may think 6 months is also substantial. In exam, sir, compulsory we have to give a note. This is a substantial time. Okay. So according to question, you will understand it. Institute asks this question, then it is a substantial time. Okay. Because otherwise, if it is not a substantial time, you are going to transfer it to profit and loss account. तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में भले 9 months is also considered as substantial time and even 4 months is also considered as substantial time.
But in real life, 12 months to 15 months is okay. We'll consider it as not substantial. After that, we will consider as substantial. Got the concept? Examples. Manufacturing plants, power generation facilities. It takes time. Investment properties, inventories. Wine का example is to me. I have given you this example, which takes a substantial time. So we will add that interest in the asset only. Inventory में add करेंगे. Exclude कौन? Assets which are ready for use. Inventory other than investment properties. Inventory that are routine investment. यहाँ पे inventories हो गया है. Investment other than investment properties. Investment other than inventory investment properties. ये थोड़ा सा एक्सक्लूड का आंसर गलत होगा. ये देखो एक्सक्लूड में इन्वेंटरीज अदर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स अदर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होना चाहिए. नंबर 2 पे. ओके. नंबर 3, इन्वेंटरीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चरिंग रिपीटेटिव बेसिस. 100 पेजेस में भी चेंज कर देना क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन. Now, what is the treatment of borrowing cost? Yes. Borrowing cost on qualifying assets. What you are going to do? बोलिए ना आगे क्या आएगा? Substantial time. अरे borrowing cost पूछा है. हाँ, कैपिटलाइज बोलते हो उसको. आप भी तो क्या भाई सब क्या बोल रहे हो ये. हाँ, कहा ध्यान बीच में से ना ऐसा गॉन हो जाता है एकदम से. एंड अदर्स में कहां पे जाएगा? P&L के बीच में से क्या करते हो मुझे समझ में नहीं आता भाई. इतना अच्छे से समझाया. क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कैपिटलाइज होगा. P&L अदर्स में सिंपल है. बोरिंग कॉस्ट चार्ट समझ में आना चाहिए. क्या होगा? इमेजिनेशन जीरो कुछ स्टूडेंट्स का. कुछ अलग ही थॉट में चले जाते हैं. दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मेरी मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, क्या सोचते रहते पता नहीं. एंड दिस इज ओनली रीजन ऑफ फेल्यूर. कि जब भी आई एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग यू हैव टू बी 100% अलर्ट होना चाहिए कि व्हाट सर इज गोइंग टू एक्सप्लेन. recognition criteria for any asset. What are recognition criteria? Yes, Hardik, what are recognition criteria for any asset? ये ऑलरेडी 10 बार हुआ है. अभी आने के बाद हुआ था आज. हाँ बोलिए. Sir, future economic benefits that will flow to the enterprise plus cost can be measured reliably. 1000 बार हुआ है recognition. Sir, एक छोटा सा डाउट था. बोलो. ये देखो सेम थिंग. हाँ सर जैसे सर हमने अभी पीछे देखा कि सब्सटैंशियल पीरियड होगा तो ही उसको हम कैपिटलाइज करेंगे. सर अगर बाय चांस किसी मैनेजमेंट ने कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट अगर 3 मंथ्स को भी इंटरेस्ट मतलब 3 मंथ्स की एसेट को भी कैपिटलाइज करना चाहती है तो सर यहाँ अगर 12 मंथ्स लिखा है तो हम तो उसको रिवर्स करेंगे ना. नहीं नहीं, हम ओपिनियन देंगे हमारा. देखो हम किसी को बेटा फोर्स नहीं कर सकते. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा ये ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा. ये अपने एक लैंग्वेज में बोलना होगा. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये एक टाइप का सजेशन है. ठीक है. ये एक टाइप का सजेशन जो एक पति अपने पत्नी को देता है. मानना है नहीं मानना है वो पत्नी का काम है. सिंपल भाषा में ये ध्यान में रखो. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसा ही है. मैनेजमेंट मतलब पत्नी पकड़ के चल बेटा. और हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पति समझ के चलो. वी विल गिव दिस एडवाइस. सामने वाला मानने वाला नहीं है पर अपना काम करने का टाइम है बेटा. बोलेंगे सर अच्छा समझ में आया. तो ये 3 मंथ्स का टाइम मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये ध्यान में रखो कि मैनेजमेंट विल टेक अ कॉल. हम लोग उसको अपने को बराबर नहीं रखा तो बेटा वो एक राइटिंग में लिख देना, रिपोर्ट में लग देना कि इन्होंने 3 मंथ्स को भी क्वालिफाइंग किया है. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. उनके रिपोर्ट उस तरीके से बनेंगे. फिर आपको कुछ लगता है तो आप ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना बेटा. वो आया समझ में? लेकिन कंसिस्टेंसी जो कि मेन पर्पस था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अभी लाने का वो उनको तो 3 हुआ मंथ्स, ना. अभी उनके जो सभी एसेट्स है वो रेडी एक दिन में हो जाते हैं.
अभी उनको 3 मंथ्स भी सब्सटेंशियल लगा, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडवाइस दे सकते हैं। झगड़ा नहीं करने का बेटा किसी से हार्दिक, ये ध्यान में रखो। नहीं लगा तो अपना एक लेटर लिख देने का, वो ऑडिट रिपोर्ट में डाल देने का, बस। हम किसी को भी ये रिवर्स करने लगाएंगे, देख मैनेजमेंट है उनको समझ में आता है रियल हाँ लाइफ जी में, सर। वो आप ही का सुनने वाले हैं। फिर भी नहीं सुन रहे तो ठीक है, फिर कर दो। आया ठीक है समझ सर। में? और हाँ जी इतना ना सर। आप ऑडिट के एंगल से मत देखिए, मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ऐसा है ये एडवाइस दे सकते हो, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया पति पत्नी का, ये एडवाइस देना अपना काम है भाई, सुनना नहीं सुनना उनका काम है। ठीक है सर। और नहीं अच्छा लगा तो बेटा अपने पास एक क्या दिया हुआ है, पेन का पा पेन का पावर। ऑडिट रिपोर्ट, यस सर। वो बड़ा बढ़िया चीज दिया है, कर दो डिस्क्वालीफाई रिपोर्ट। ओके। ठीक है सर। हाँ जी। borrowing cost, specific borrowing. Now see, now bank is not giving loan for any specific, it can happen that bank is sanctioning general borrowing. Okay, bank is not giving any loan for specific construction of that asset. It might happen. And it might happen that bank is giving specifically for that asset. Now if specific borrowing is there, then we do not have any problem, beta. We will take directly that interest rate. But suppose if I am taking 3-4 loans from the bank, from SBI, from ICAI, from Kotak Bank. So I am taking 3-4 loans, not only for construction of this asset, for overall routine work, working capital, for any project which is going on. So this is a general borrowing, and interest rates might be different. They are giving you business loan. So in that case, we have to calculate weighted average rate. Okay, we have calculated weighted average in S20. We calculated weighted average in S13. In weighted average, we calculated, you remember that we consider that months also. Here, we would take only simple interest. Simple interest means what? For example, yes, 1 lakh rupees. What is the weighted average rate? 1 lakh rupee I taken at 10%. And 2 lakhs rupees for 13%. If it is simple interest is average. Simple average is 11.5%. Correct है बेटा? 10 + 13 बेटा 3 का डिफरेंस है, 1.5 डिवाइड होगा। इसके लिए कैलसे की क्या जरूरत लगती है? 13 और 10 का डिफरेंस 3, 3 का हाफ होता है 1.5, हाफ होगा तो 10 में 1.5 ऐड किया, इसके लिए थोड़ी कोई कैलसी यूज करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो। 1 लाख इंटू 10%, 10,000, एंड 2 लाख का 13% कितना हुआ? 13 का टेबल स्कूल में कभी तो पढ़ाया होगा, तो ये हो गया बेटा 36,000। 36,000 on 3 lakhs, मतलब 12% will be the interest as per weighted average. Weighted average के हिसाब से कितना हुआ? 36,000 divided by 3 lakhs. You will consider these amounts also. When you consider 1 lakh and 2 lakh also, it is called as weighted average. And you consider only interest rate, it is called as simple average. So we never consider simple average in this, we consider weighted average. Got the concept? Easy है तो बेटा ठीक है। स्पेसिफिक बोरोइंग होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। यू विल कंसिडर दैट इंटरेस्ट रेट, पर्पस टू ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एसेट, बोरोइंग कॉस्ट आर रेडीली आइडेंटिफाइबल, एंड सपोज you have taken a loan but your money is idle money, so you know ki loan will take a sanction time will, so you know for sanctioning of a loan it will take some time, therefore you already have loan file, they sanction it, but you have not yet constructed the asset. Till that whatever amount you received from the in the form of loan, you invested it somewhere and you earned some income, so your interest has to be capitalized, and whatever income you earn that will be deducted.
गॉट द कॉन्सेप्ट? अरे भाई लोन सैंक्शन होने को टाइम लगता है, आज फाइल डाला तो कल लोन नहीं मिलता, वहां पे थोड़ी मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं, आज फाइल डालो और पैसा ले लो, ये थोड़ी होता है, तो वहां पे टाइम लगता है। अभी ये टाइम जब लगता है, आपने लोन सैंक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है बाद में, तो आपने क्या किया, मुझे लोन मिल गया, कम बैंक ने आपको 1-1.5 महीने में लोन दे दिया, ये 12 महीने का टाइम लगने वाला है, पैसा तुरंत सभी नहीं लगने वाला, तो ये मैं लोन लेके जो भी पैसा मुझे मिला वो इन्वेस्ट कर दिया, 70%, 30% उधर दे दिया। तो भाई 70% में से जो कमाओगे 1-2 महीने का जो भी इनकम, तो वो क्या करोगे भाई, वो डिडक्ट कर दो, उतना इंटरेस्ट कम हो गया, लॉजिकल है, इसमें थोड़ी कोई बड़ी बात उन्होंने बताई है, ये तो आप भी सोच सकते हो। सो डिडक्ट एनी इनकम अर्न फ्रॉम द एसेट। ओके, general borrowings. Now what about general borrowings? General borrowings, we are going to use that weighted average rate. Weighted average means capitalization rate. This weighted average rate is called as capitalization rate. Got the concept? So capitalization rate is nothing but total borrowing cost 36,000 divided by total loan. Total loan is weighted average of borrowing, that average of borrowings. And this amount you will apply to your qualifying asset. एंड क्रॉस चेक ये करना कि जेब से जितना गया है उससे ज्यादा कैपिटलाइज ना हो। आई विल एक्सप्लेन दिस इन द प्रॉब्लम पार्ट, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। नाउ व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट? व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट? अरे भाई 9 बज गए, समझ में ही नहीं आया क्या? आज का लेक्चर आपने बहुत जल्दी करवा दिया। ओके, कमेंसमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, सो व्हेन यू विल स्टार्ट दिस कैपिटलाइजेशन? भाई बिजनेस रेडी कहां से बोल रहे हो? बिजनेस इज नॉट रेडी बेटा, एसेट इज रेडी। ओके, सो कमेंसमेंट इज नॉट, दे आर नॉट आस्किंग सस्पेंशन, दे आर आस्किंग यू कमेंसमेंट। कमेंसमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, नो एसेट इज रेडी नहीं, व्हेन एसेट इज यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट। हाउ? रेडी होने के बाद तो यू आर गोइंग टू सीज दिस कैपिटलाइजेशन। When asset is ready is not correct, bhai. When you are starting with this activity, now commencement, expenditure must be incurred on that qualifying asset. If asset is ready, you will seize that interest to be capitalized. Okay. And borrowing has to be taken. You started this construction. You started to expend on it. Your activity, for example, suppose if I am starting renovation activity, my one by one POP, fall ceiling, then मेरा painting, furniture, sofa, ये सब कुछ मेरा शुरू हुआ है. I am incurring cost on it. And for that, I must take some loan. Only expenditure is not allowed. You have to borrow something. If you are not borrowing, then how you are going to capitalize any interest? Okay, so you must incur expenditure. You must borrow something. And then activities are in progress. If asset is ready, then interest has to be stopped for capitalization, though your meter is going on. Okay, तो भाई साहब ये समझ लीजिए, कमेंसमेंट ये तीनों होगा तो होगा। लोन भी लेना जरूरी है, खर्चा करना भी जरूरी है, और एक्टिविटीज प्रोसेस में रहना भी जरूरी है। ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। एक भी इसमें, इफ लोन टेकन बट एक्टिविटी इज नॉट येट स्टार्टेड, नो इंटरेस्ट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। Sir, expenditure has done, but not from borrowing, from my own pocket. Okay, there is no interest. अरे लोन तो नहीं लिया तो का इंटरेस्ट होगा? कॉमन सेंस है भाई। सो ये यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम, रट्टा मार है। ओके, नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज सर? Activities means what? Okay, let's understand. It includes direct activities relating to construction. I already explained you. POP working, this construction activity, painting, all these, and supporting activity also. For example, you need some design. Okay, that is also part. Sir, construction not started. We are doing 3D designs.
This is also, and I have taken a loan. That 3D design means actual field पे काम नहीं चालू, but supporting activity. हाँ, इंटीरियर जो है अपना आर्किटेक्ट वाला, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो भी पार्ट है. सर एक्चुअल फील्ड पे कुछ काम नहीं चालू, अरे भाई वो काम कर रहे पीछे बैठ के, डिजाइनिंग का काम कर रहे, तो वो भी अपनी एक्टिविटी है. ओके सर, व्हाट इट एक्सक्लूड्स? Activities during which the asset is merely held and no productive development takes place. Sir, activity just started. Then I'm not getting any employee or that labors to do this activity. So my work is stopped. Sir, there is, labor strike. And therefore, beta, labors are not working. My active interruption, my active activity, or what I can say, that activities are not going on. So don't better record this capitalization. In that case, interest will be transferred to P&L. Suspension. Now, what is the difference between suspension and cessation? See the difference. Suspension versus cessation. Suspension means temporary delay. Cessation मतलब cease मतलब to stop permanently. Okay, suspension कब होगा? If capitalization, temporary stop. Capitalization of borrowing cost is suspended when active development is interrupted. Labor strike exam. But suppose beta not suspended if this active development is for some technical problems, or suppose there is heavy rain for 3 days and you stop that activity. It's okay. It is not suspended. 3 days का interest और we cannot capitalize. अरे भाई it's a partner nature है. बारिश आएगा तो क्या फिर हम लोग क्या उसमें काम करें क्या? अभी कलर पेंट जो है वो सूखने के लिए it will take time. Water level increased. Okay. If you know that in construction contract, that RCC, sometimes beta we have to stop that activity. Why? Because वो जो सीमेंट होता है वो सूखने के लिए टाइम लेता है और वो रोज उसके ऊपर पानी मारते हैं हम लोग, तो वो एक्टिविटीज बेटा वी आर गोइंग टू स्टॉप. ओके, सो यस, कोरोना एक्टिविटी देन बेटा सस्पेंडेड. कोरोना एक्टिविटी बेटा, कोरोना एक्टिविटी क्या बोलो, कोरोना आया तो बेटा वो सस्पेंडेड बोला जाएगा. ओके, टेम्पररी डिले is a necessary part. That example which I have given for slab construction के लिए. When you cease this cessation, when asset is ready for use, khatam. All activities are completed. Construction is completed in parts and completed part is ready. Business park. Okay. All activities over, or business park having several buildings. We have divided it. Then beta एक वो part ready हो चुका है. In parts also or complete project also. Whatever the case. Disclosure. सस्पेंड जब होता है तब हार्दिक वो P&L में जाएगा. इंटरेस्ट मीटर इज गोइंग ऑन. इन सस्पेंडेड एक्टिविटीज योर इंटरेस्ट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L. ये ध्यान में रखो. And when it is a part of your activity, it is not called as suspended, then interest is capitalized. Number one, for which assets you adopted this policy. And number two, what is the amount that you capitalized during the period. खत्म हो गया भाई. Standard over. Easy or difficult? खत्म. If any doubt you can ask me. Standard में कुछ दम नहीं है. It's very simple standard. S2, S10 and S13
I can call it as big standard. S16 is nothing. What is the treatment of borrowing cost? ओके भूमिका जी को कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स. यस भूमिका जी, यू कैन आस्क योर डाउट्स. गुड मॉर्निंग सर. नहीं डाउट? हेलो हाँ बोलिए भूमिका जी, सर. बोलिए ना. सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए. सर मैं ये पूछ रही थी ये बोरोइंग कॉस्ट जो है हमारी एसेट्स है, ठीक है. अब पर बैलेंस शीट में बोरोइंग कॉस्ट लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, चाहे वो बैंक से लो या फिर पब्लिक से लो. आपका कुछ तो गड़बड़ हुआ है मैडम. लोन मैंने लिया हुआ है, उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो मशीन में ऐड करूं या P&L में टू इंटरेस्ट बताऊं, इसके बारे में चल रहा है. मैंने एक शेड मानने के लिए लोन लिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड. लोन अलग दिखेगा, लोन अमाउंट 1 लाख है. शेड का कंस्ट्रक्शन सपोज मेरा 2 लाख का हुआ, कुछ मेरे जेब से डाला, और वो शेड का टाइम ले रहा है वो बनने के लिए. अभी ये 1 लाख के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 10,000 रुपया, वो 10,000 में P&L के डेबिट में मारूं या ये 2 लाख में ऐड करूं, इसके बारे में चर्चा चल रही है. सर 1 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट. हाँ समझ गई? हाँ सर समझ. आपको कंफ्यूजन है, लोन में नहीं ऐड करना है, वो एसेट जो बने हैं उसमें ऐड करना है ये लोन का इंटरेस्ट. ओके सर, एक्सक्लूड का मतलब क्या, क्या बात कर रहे हो? एक्सक्लूड का मतलब बेटा एसेट में ऐड नहीं करने का, मतलब P&L में ले लेने का. क्वालिफाइंग एसेट में वो हम लोग जो एक्सक्लूड करते हैं मतलब वो नहीं कंसिडर करते. कौन सी बारे में बात कर रही है भाई साहब? भाई ये जो एग्जाम्पल थे उसके बारे में चर्चा थी. जो एसेट ऑलरेडी रेडी है तो आप थोड़ी उसको कंसिडर करोगे. जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेडी है उसको थोड़ी हम लोग इंटरेस्ट में लेंगे. इन्वेंटरी जो रूटीनली मैन्युफैक्चर होती है वो थोड़ी उसके लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट आएगा. रूटीनली मतलब क्या? मैं इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर रहा हूं, बुक्स है, पेंसिल्स है, इरेजर है, पेन है, मोबाइल है. ये बनने को थोड़ी टाइम लगता है, एक बार प्रोडक्शन में डाल दो दूसरे दिन तक तैयार होके बेचने के लिए अवेलेबल. तो बेटा वो बारे में चर्चा चल रही है. ओके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बेटा वो गलत लिखा गया, इन्वेंटरीज लिखा गया. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मतलब जो रेडी है, तैयार है पूरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. प्लॉट्स आपने सिर्फ ये करके रखे हुए हैं, मार्किंग करके रखा, तो वो तो रेडी है ना भाई सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. चलो हार्दिक का डाउट है, बोलिए. सर बोलिए एक छोटा डाउट सा है. एग्जाम हाँ जी सर, वही छोटा सा डाउट है सर. जैसे सर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरी लेबर है जो, या मेरे एम्प्लॉयज हैं जो कि गलत कंस्ट्रक्शन में काम एग्जाम्पल है करते भाई साहब, गलत एग्जाम्पल. इफ यू आर कॉन्ट्रैक्टर हैं. नहीं सर, सॉरी यूर सॉरी, मेरा A7 इज एसेट है. एप्लीकेबल. हाँ हाँ सॉरी सर, मेरा एसेट है और मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लिए और वो काम कर रहे हैं सर. तो जो मैंने जैसे उस एसेट पे लोन लिया हुआ है, तो सर अगर बाय चांस उनकी लेबर स्ट्राइक पे गई तो वो P&L में चल जाएगा मेरा लोन. हाँ जी, काम चालू नहीं है तो हाँ जी. हाँ. और सर अगर बाय चांस नेचुरल कैलामिटी की वजह से मेरा काम रुक गया और नेचुरल कैलामिटीज अभी सपोज आपने प्रेडिक्ट की होगी कि भाई ये सीजन में बारिश आता ही आता है, यस सर. तो फिर वो आपकी इंटरप्शन नहीं बोला जाएगा, वो तो आप पकड़ के ही चल रहे थे. हाँ तो ध्यान सर में फिर आया? वो भी पीएन हाँ सर, तो फिर वो वो भी नहीं पीएन. P&L में आएगा. पर सपोज गलती से बेटा एकदम से ऐसा कुछ हो गया कि भाई साहब आपके एरिया में इतनी बारिश हुई कि 4 महीने आपके एरिया में से आप वो पूरा पानी के वजह से बेटा, और लोगों ने इंटरेस्ट में माफी भी नहीं दी, तो वो इतना भर गया, तो वो इंटरेस्ट फिर आप लोग बोल सकते हो कि वो इंटरेस्ट हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो P&L में डाल देंगे. ठीक है सर.
अगर सर बाय चांस हमने प्रेडिक्ट किया तो ठीक है, अगर बाय चांस अनप्रेडिक्टेड हुआ तो कैपिटलाइज। बेटा मैं वापस हार्दिक आपको ये बताता हूँ, दीज आर दी एडवाइसेस जो आप यहाँ बैठ के या मैं भी नहीं दे सकता हूँ। आप क्लाइंट को जो आपके सोच के हिसाब से बराबर लग रहा है वो क्लाइंट को आप सजेस्ट कीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये, आप उनको चॉइसेस दे सकते हो। अल्टीमेटली बेटा अच्छा। मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि रियल लाइफ में हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि तुम ये करो मत, फिर वो करते ही है एट द एंड। फिर बेटा चाय पानी पे उनको इनकम टैक्स वाले बुला लेंगे, लोग भरोसा नहीं रखेंगे। आपको गलत लगा तो आप क्वालिफाइंग रिपोर्ट देना। ये रियल लाइफ में, हाँ, पर आपका क्वेश्चन सही था। आप क्लाइंट को क्या एडवाइस दोगे? ये ऐसा एडवाइस देना कि भाई ये नेचुरल कैलेमिटी है और वो बाद में काम रुक गए और आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था तो फिर P&L में डाल दो। आपने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ है तो कैपिटलाइज कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। यस। नेक्स्ट वन, और एक्सट्रीम सिचुएशंस में मत जाओ। ओके, एक्सट्रीम सिचुएशंस आई विल ऑलवेज टेल कि इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस होते तो ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पर इंस्टीट्यूट आपको बेसिक आइडिया दे देते। ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है कि भाई नेचुरल कैलेमिटी आएगी या ये आएगा। ये ऑन द स्पॉट आपको सीए बनने के बाद डिसीजन लेने हैं। अपने को इधर एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ओके सर, ईयर अफेक्ट्स विल बी सेम। ठीक है। हाँ जी भावना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? बेटा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना मुझे। सर ऐसा एक बार स्पेसिफिक स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब हमने लोन ही उसी के लिए लिया तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वही ऐड हो जाएगा। जनरल बोरोइंग में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो आप वेटेड एवरेज निकाल के वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब उसी के लिए लोन लिया मैंने। आया समझ में? यस सर। नहीं नहीं बेटा हार्दिक, बिंदास। क्या होता है बेटा, मैं आपको इसलिए मैं टोक रहा हूं हार्दिक, डोंट टेक इट पर्सनली। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस, many students in CA course they are doing some imaginary things in income tax subject, also in financial management. Some are assumption based, and what happens in reality it is very different, but bookish language is different. Now in India we are having monsoon season from जून जुलाई अगस्त सितंबर, बट अभी ये अक्टूबर महीना चल रहा है फिर भी हमारे इधर बारिश आ रही है। तो थ्योरी कुछ अलग है एंड रियलिटी कुछ अलग है। फिर आप बोलोगे उसमें छाता यूज नहीं करने का, तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। ये 4 महीने में हम लोग ऐसे ही कपड़े डाले, नहीं बाबा अक्टूबर हीट है, ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी से ना बेटा थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये ऐसा नहीं होता है। बुकिश इज लैंग्वेज इज डिफरेंट, वो अपने को नॉलेज के लिए है, एंड रियलिटी बहुत अलग होती है और दोनों को रिलेट नहीं कर सकते। वहां पे आपको कुछ खुद से स्टैंड लेने पड़ेंगे ऑन आपको क्लाइंट के। यहाँ पे जीएसटी आपको जो पढ़ाया जाएगा, तो आप इतने सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए फिर मैं माल यहां से लिया, फिर मेरा माल यहां से इधर आया। अरे भाई आप इतना करते बैठोगे तो कभी पास ही नहीं हो पाओगे। तो रियलिटी में मत जाओ, वो अलग चीजें हैं, वो आपको समझ में आएगी। अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स है तो आप अपने इमेजिनेशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। भाई वो उसका काम है, हमारा काम है एडवाइस देना। नहीं सुना 3 महीना या 12 महीना या 6 महीना, तेरे पास बाबा, मैं क्या करूं उसमें। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं, इन आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे बाकी सब्जेक्ट्स में। ओके सो ये छोटा सा पार्ट है, ध्यान में रखिए। यस मौसमी जी, मौसम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए बेटा। सर ये सस्पेंस क्या प्रॉब्लम है सर? सस्पेंशन एंड सेसेशन। हेलो। सस्पेंशन मतलब स्टॉप करना, बट टेम्पररी स्टॉप करना।
सेसेशन मतलब जब एसेट रेडी हो चुकी है उसके बाद इंटरेस्ट को आप कभी कैपिटलाइज ही नहीं करोगे, तो वो एसेट में ऐड कर दो, सॉरी P&L में डाल दोगे। आया इंटरेस्ट समझ को में? कैपिटलाइज नहीं करना सर। हाँ, तो इंटरेस्ट का ही चल रहा है ना ये कब जी से जी स्टैंडर्ड। जी जी सर, जी सर, ओके सर। ये स्टैंडर्ड ही उसी के बारे में कि जी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कब करना है और इंटरेस्ट को स्टॉप कर देना है। कैपिटलाइज मतलब एसेट में ऐड नहीं करते हुए P&L में कब रिकॉर्ड करना है। ये यही तो ये स्टैंडर्ड की परिभाषा है बेटा। जी सर, बस यही कंफ्यूजन था कि और मतलब सस्पेंशन में आप लोग उसको P&L में थोड़े दिन के लिए रखते हो। शॉर्ट टर्म के लिए सर। हाँ, ऐसा पकड़ो, उसके बाद जैसे ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी आप वापस एसेट में ऐड कर दोगे। ओके, ठीक है, ओ, थैंक यू सो। ठीक है। सो आई होप स्टैंडर्ड इज क्लियर नाउ। एक्चुअली आज एज 16 मैंने बता दिया। नाउ इट्स योर ड्यूटी। नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू टेक सम इलस्ट्रेशंस of S16 and we will complete S10 के illustration because now you already sat for more than 2 hours 15 minutes. So अभी ब्रेक तो वैसे भी नहीं दिया है, so we will stop today after this session of S16. I will give you time to take some screenshots. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हार्दिक जी माइक को अनम्यूट कीजिए बेटा, हैंड रेज कीजिए। हाँ जी हाँ जी सर। बेटा, आप पूरा बुरा मत लगने देना, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं सर नहीं ने सर, डांट मेरी दिया मैंने। नहीं नहीं सर, आप मेरी गलती थी तभी बोला। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बोला कि आप बाद में भी इसके ऊपर बहुत थिंकिंग करते बैठते हो एंड यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा बाद में। स्क्रीनशॉट 1 ले लीजिए बेटा। डन सर। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ जी, स्क्रीनशॉट 2। ये डन 100 सर। पेजेस बुक है आज का। यस सर। See, this example I have given. First, you solve by your own this example, and then check your answer, and then write it in 100 pages book. ओके सर, डन सर। डन सर। 6 है ना? डन सर। नहीं, ये 5 फाइव दूसरा। फाइव फाइव। वापस एक बार ले लीजिए। 5 डन सर। 6 डन सर। डन सर। डन सर। लास्ट रिवीजन कौन से टॉपिक का किया आपने? सर मैंने हम्म, सर मैंने हाँ जी। सर मैंने लास्ट टॉपिक तो AS13 और 10 का करा था। अच्छा, डन सर। और ये क्वेश्चन जस्ट नोट डाउन इट, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। डन सर। So beta, today we have finished with accounting standard 16 theory part. Illustrations of S10 and S16. We'll take it in the next class. I hope you are very clear with this accounting standard. Might be I will take first S19 so that you can do your exercise. In first half, I will take AS19 and in second half, I will take illustrations of AS16 plus I will try to finish AS10. Okay. So AS16 complete करना, AS10 भी complete करना from study mat. So it will be very useful for you कि हो जाएगा. Extra question, I am going to upload it. Don't worry.
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आज बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी, आई हैव नॉट गिवन अ ब्रेक। ओके, सो कंप्लीट कर लीजिए। S13 के स्क्रीनशॉट्स, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, S13 के स्क्रीनशॉट्स रह गए। हाँ जी, S13 के स्क्रीनशॉट्स रह गए, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक ही हो गया इस। हाँ जी हार्दिक, यस सर। ये दिए थे क्या बेटा? नहीं दिए थे। नहीं, ये नहीं दिए सर। यस, वेट, स्क्रीनशॉट 1। डन सर। 100 पेजेस बुक। हाँ, यस सर। डन। डन सर। डन सर। डन सर। बेटा फॉर्मेट इज नॉट, कैन आई गिव यू द फॉर्मेट ऑल्सो? इट्स ओके, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कर ही दिया था ना। सर फॉर्मेट तो समझ में आ गया था। हाँ तो वो रहने दीजिए, फिर वो नहीं देता हूँ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड दैट ऑलरेडी यू आर अवेयर। ओके, यस सर। बेसिक थ्योरी लिख के दिया। सो एनी डाउट हार्दिक? क्या इजी था आज का सेशन? कैन यू कंक्लूड यस द सर। सेशन? क्या आज यस आपको सर। समझा, बताओगे आप? सर पहले तो सर स्टार्टिंग में AS13 के क्वेश्चंस करे सर। बेस्ट तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वाला समझ में आ गया सर, वो दिक्कत कन्वर्टेबल था। डिबेंचर्स, वो अच्छे से समझ में आ गया सर। एंड सर AS16 समझ में आ। S16 क्या बताता है? इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए आपने? सर इंटरेस्ट को क्या कब कैपिटलाइज करना है और इंटरेस्ट को कब PNL में ट्रांसफर सभी करना है, ये एसेट्स को इसमें आप लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे? नहीं सर, सिर्फ सब्सटैंशियल पीरियड के जो एसेट्स हैं उन्हीं को ही हम सिर्फ कैपिटलाइज करेंगे, जो कि हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझा होगा, और सॉरी आपको मैंने ब्रेक नहीं दिया। वंस अगेन 2 घंटे आपको बैठा के रखा, तो टाइम का पता भी नहीं चला। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। अयाज जी, अयाज आज बोले